धीमहि यो यो नमः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 महादेवा। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 सदा शिवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 सदा शिवा। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, एंगल ज्योति राम कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, एंगल ज्योति राम कृष्ण। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 महादेवा। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 सदा शिवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, हर 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 सदा शिवा। जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, एंगल ज्योति राम कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, एंगल ज्योति राम कृष्ण, एंगल ज्योति राम कृष्ण, एंगल ज्योति राम कृष्ण, एंगल ज्योति राम कृष्ण।
विघ्न विनायका देव देवा परम ज्योति विनायका। ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। देवी दया करो माँ, जय माता करे काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता गौरी काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता करे काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता गौरी काली माँ। देवी दया करो माँ, देवी दया करो माँ, देवी दया करो माँ। देवी दया करो माँ। जय माता करे काली माँ, जय माता गौरी काली माँ। जय माता करे काली माँ। जय माता गौरी काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता करे काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता गौरी काली माँ। दुख निवारो मैया, दुख निवारो मैया, दुख निवारो मैया। दुख निवारो मैया। देवी भक्त जनों के मैया, देवी भक्त जनों के मैया। देवी भक्त जनों के मैया। देवी भक्त जनों के मैया। मंगलकारिणी माँ, जय माता करे काली माँ। मंगलकारिणी माँ, जय माता गौरी काली माँ। मंगलकारिणी माँ, जय माता करे काली माँ। मंगलकारिणी माँ, जय माता गौरी काली माँ। मंगलकारिणी माँ, मंगलकारिणी माँ। मंगलकारिणी माँ। मंगलकारिणी माँ। जय माता करे काली माँ। जय माता गौरी काली माँ। जय माता करे काली माँ। जय माता गौरी काली माँ। देवी दया करो माँ, जय माता करे काली माँ। देवी दया करो माँ,
મંગલકારિણી માં, જય માતા કરે કાલી માં. स्वामीजी की जीवन गाथा आओ सब मिल गाए हम। ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। स्वामी जी की जीवन गाथा आओ सब मिल गाए हम। ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। भटके पथ पर हम सबको जो राह बताने वाले हैं, ये मानव की मानवता को जाग उठाने वाले हैं, जाग उठाने वाले हैं। भटके पथ पर हम सबको जो राह बताने वाले हैं, ये मानव की मानवता को जाग उठाने वाले हैं, जाग उठाने वाले हैं। स्वामी जी की जीवन गाथा आओ सब मिल गाए हम। ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। तेरी गाथा भारतवासी अनुदिन गाते रहते हैं। भक्ति ज्ञान के संगम पर हम तुझ में सब मिल जाते हैं। तेरी गाथा भारतवासी अनुदिन गाते रहते हैं। भक्ति ज्ञान के संगम पर हम तुझ में सब मिल जाते हैं। परमहंस के परम शिष्य तुम, भू पर स्वर्ग बसाए हम। विश्व जगत की माला गुन कर गुरु के गले चढ़ाए हम, गुरु के गले चढ़ाए हम। स्वामी जी की जीवन गाथा आओ सब मिल गाए हम। ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। तुम भारत के आन मान हो, नव जीवन ध्रुव तारे हो। तुम्हारे
तुम्हारी जय जय बनी रहे, अब हम सब पाव पखारे हैं। तुम भारत के आन मान हो, नव जीवन ध्रुव तारे हो। तुम्हारी जय जय बनी रहे, अब हम सब पाव पखारे हैं। जय हो स्वामी जी की जय जय, परमहंस के प्यारे तुम। जय जय बनी रहे भारत मंदिर के अमर सितारे तुम, 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 मंदिर के अमर सितारे तुम। ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। Om Aim Sarvadev Devi Swarupaya Shri Ram Krishnaya Namaha. In this modern age, Sri Ramakrishna teaches us how to love God and at the same time do our duties to the world. Om Namo Narayanaya, revered Mataji and loving devotees of the Master. Today, we will discuss some reminiscences of the Master's household disciple, Balaram Basu. Balaram Basu's first meeting with the Master was probably 1st January 1881. He went with Ramdayal to Dakshineshwar. The Master's room was crowded with Brahmo devotees, including Keshav, and the Master was saying, God cannot be seen without yearning of the heart. After the lecture, the Brahmos left the room and the Master turned to Balaram and said, Is there anything you want to ask me? Yes, sir. Does God really exist? Can a person see him? The Master answered, Yes, he reveals himself to the devotee who thinks of him as his nearest and dearest. M. Recorded in the Gospel of Sri Ramakrishna. At Balaram Babu's home, the Master frequently lost himself in samadhi, dancing, singing and talking about God. Those of the Master's disciples and devotees who could not go to Dakshineshwar visited him in Kolkata and received his instructions there. He often asked Balaram to invite young disciples such as Rakhal and Narendra to his house, saying, These pure souls are the veritable manifestations of God. To feed them is to feed God Himself. They are born with special divine attributes. By serving them, you will be serving God. These young men were later Swami Brahmananda and Swami Vivekananda. Every year, Balaram celebrated the chariot festival of Lord Jagannath in his home. The Master's presence greatly enhanced the joy of the occasion. The devotees would decorate Lord Jagannath's small wooden chariot with flowers and flags, and then place the image in it. There was a small courtyard in the middle of the house, around which overhung the verandas of the upper floors. After the worship, the chariot would be pulled round and round by devotees on these verandas, while a kirtan party followed, singing devotional songs. Swami Sharadananda, a disciple of the Master, described the chariot festival of 1885. He said, A kirtan party came. The Master and the devotees joined in their singing as the chariot was drawn. Where else could one experience and witness such a flow of bliss, of exuberant devotion, of divine ecstasy, and such sweet, graceful dancing of the Master? Pleased with the pure love of the pious family, Lord Jagannath did indeed manifest himself in the image on the chariot
and in the body of Sri Ramakrishna. It was a rare sight. After a few hours of such kirtan, cooked food was offered to Lord Jagannath. The master and the devotees would partake of the prasad. That fair of bliss came to an end late at night when the devotees returned home with their hearts filled with love and joy. The world outside was forgotten. Everyone felt blessed and full of joy. Throughout his life, Balaram was a believer of ahimsa, non-violence. He even thought that it would be wrong to kill the mosquitoes that disturbed his meditation. But after associating with Sri Ramakrishna for a couple of years, he realized that the most important thing in spiritual life is to keep the mind on God. Thus, killing a few mosquitoes for the sake of steady meditation should not be considered a sin. His orthodox upbringing, however, made him doubt this reasoning, and so he immediately left for Dakshineshwar. Arriving at Sri Ramakrishna's room, he noticed to his great surprise that the master was busy killing bed bugs. He then understood and did not ask any further questions. One day, Balaram decided to test the master's power of omniscience. As he carried a tray of sweets to the master, he mentally selected 2 of them for the master to take. Balaram was amazed when the master smiled at him and took those very 2 sweets. Such was the master's leela. Before the master went to live at the Shyampakur house, he stayed for a week at Balaram's house. During the master's illness, Balaram continued to provide all of his food since the master did not care for the food that was brought from the money people contributed through donations. After the passing away of the master, the Holy Mother moved to Balaram's house, and Balaram then arranged her pilgrimage to Varanasi, Vrindavan, and other holy places. His home was always open to the Holy Mother and the disciples of Sri Ramakrishna. The master's monastic disciples established a monastery at Baranagar, and Balaram visited them regularly. One day he noticed that the monks were eating only rice and spinach. After returning home, he told his wife that he would only eat rice and spinach for his meal. She at first thought that he is asking for such plain food because of his weak stomach. But when she later heard the whole story, she immediately sent food and other articles to the monastery. Thereafter, Balaram would give 1 rupee every day for the food offering to the master. Moreover, he would keep track of the food situation in the monastery through his brother-in-law, Swami Premananda, and through the cook. Swami Vivekananda had tremendous love and regard for Balaram. Swamiji once said to him, "Our relationship with you is different. If you push us out of the front door, we shall enter again through the back door." Balaram always stood beside the disciples of the master and served them wholeheartedly. One day, however, Balaram cried to Swamiji, "You and I both went to the master, but now you have renounced your home and become a monk. You are practicing japa and meditation and making tremendous progress in a short time, whereas I remain the same bound soul. I have achieved nothing." "Look, Balaram," answered Swamiji, 3 generations of your family have given service to holy people. Do you think such a thing could be fruitless? As a result of such virtuous actions, you have had a chance to serve a great soul like Sri Ramakrishna. This will glorify your dynasty. You don't need to practice renunciation or hard austerities. It is through the result of your virtuous deeds that you met and served the master. And you know how much the master liked to visit your home and was fond of your offerings.
What will you do with heaven or liberation? Is the master's love not enough? Balaram was happy to hear that. He realized that his service to the master was equal to meditation and austerity. Sri Ramakrishna says, if one could perform work in a spirit of detachment, discarding all egoism, then one can develop love and devotion to God, and in the end, he will attain God. The master further adds, an expert dancer never takes a wrong step. He does not have to follow the rules and regulations of the art of dancing. Since he is a professional, the steps would be automatically correct. But the beginner has to follow the rules strictly until he or she attains perfection in the art. Sri Ramakrishna says, as a child besieges its mother for toys and money, weeping and teasing her, he who weeps inwardly, intensely longing to see him like an innocent child and knowing him to be his nearest and dearest, is rewarded at last with the vision divine. God can no longer remain hidden from such an earnest seeker. We pray to the Master to help us increase our devotion to God. Jai Shri Ramakrishna. Savariyare, 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 Hare Savariyare, 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 Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariyare, 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 Toma kanchor giradhari re, Savariya, Makhand chor girdhari re, Savariya, Toma kanchor giradhari re, Savariya, Makhand chor girdhari re, Savariya, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariyare, 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 Savariya, Tera garuda upar asvari re, Savariya, Tera garuda upara savari re, Savariya, Tera garuda upar asvari re, Savariya, Tera garuda upara savari re, Savariya, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariya pitambara dhari re, Savariyare, 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 Savariya, To Shankha Chakra dhari re, Savariya, To Shankar Chakra dhari re, Savariya, To Shankha Chakra dhari re,
सावरिया तो शंख चक्रधारी रे सावरिया सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया रे सावरिया रे सावरिया रे सावरिया तो हर दुखिया नरकवाला रे सावरिया तू हर दुखिया नरकवाला रे सावरिया तो हर दुखिया नरकवाला रे सावरिया तू हर दुखिया नरकवाला रे सावरिया सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया 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 सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया रे सावरिया रे सावरिया रे सावरिया तो हर दुखिया नरकवाला 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 रे सावरिया सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी रे सावरिया पीतांबरधारी धारी रे सावरिया 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 ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। हरि नाम जपीले रे प्रभु नाम जीले रे तारा जीवन नु कल्याण करीले नाम जीले रे हरि नाम जपीले रे प्रभु नाम जीले रे तारा जीवन नु कल्याण करीले नाम जीले रे हरि नाम जपीले रे हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधवा विठाल बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधवा विठाल बोल हरि नाम जपीले रे प्रभु नाम भजीले रे तारा जीवन नु कल्याण करीले नाम भजीले रे हरि नाम जपीले रे कया रे गुमान चकीरे गयो चोतो श्री हरि नाम बिना बिजो नहीं कामनो कया रे गुमान चकीरे गयो चोतो श्री हरि नाम बिना
कल्याण करी ले नाम जी ले रे हरि नाम जपी ले रे प्रभु नाम भजी ले रे तारा जीवन नो कल्याण करी ले नाम भजी ले रे हरि नाम जपी ले रे महामोंघ जीवन तारो जशे रे नकामो याद नहीं आवे कशो भूली रे गयो छो तो महामोंघ जीवन तारो जशे रे नकामो साथ नहीं आवे कशो भूली रे गयो छो तो सान में समझाओ गयो मारू मान रे तारा जीवन नो कल्याण करी ले नाम जी ले रे हरि नाम जपी ले रे प्रभु नाम भजी ले रे तारा जीवन नो कल्याण करी ले नाम भजी ले रे हरि नाम भजी ले रे हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव विठल बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव विठल बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे वेद वचन का मैं हूँ श्रेष्ठा मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा वेद वचन का मैं हूँ श्रेष्ठा मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे पंचकोश से मैं हूँ न्यारा तीन अवस्था से भी न्यारा पंचकोश से मैं हूँ न्यारा तीन अवस्था से भी न्यारा अनुभव से अनु कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है जन्म मरण मेरा धर्म नहीं
कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी। जो माला में सोच कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो। राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो। तू है ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे मेरा सच्चित आनंद रूप, 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 कोई कोई जाने रे। ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। Om Namo Narayanaya, dear sisters and brothers. Let us concentrate our minds on the beautiful form of God seated in our hearts. Encouraging us on the path of devotion, Sri Ramakrishna says, "Sing with devotion the hallowed name of the Lord, and the mountain of your afflictions will vanish, just as a mountain of cotton will burn to ashes and disappear if but a spark of fire falls on it." Om Shanti, Shanti, Shanti. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। जय श्री गुरु महाराज की जय, महामाय की जय, स्वामी जी महाराज की जय, गंगा मात की जय, महावीर स्वामी जी की जय, सर्व ऋषि मुनियों की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव।
की